So we move ahead with the next question, students. If you look at this question, the question says the kinetics of hydrolysis of methyl acetate in excess of dilute hydrochloric acid at 298 Kelvin was followed by withdrawing 5 ml of the reaction mixture at different time intervals and titrating against standard alkali, and the following results were obtained. So you're given the time duration in minutes and you're given the volume of alkali which is required. Alright, a question says show that the reaction follows first order kinetics. In case you don't get this question, students, you can read the question again. एक बार question को read कर सकते हैं. So you can read the question again and then you can check the solution to this question. Now, अगर question में ऐसा पूछा है students, show that the reaction follows first order kinetics. Have we discussed a similar question before? If you want to prove that a reaction, a certain reaction follows first order kinetics, then how do we prove that the reaction follows first order kinetics? By calculating the k values at different time intervals. तो अगर मैंने k value students अलग अलग time interval पे calculate किया, say 10, 20, 30 and infinity. अभी infinity पे तो obviously नहीं करेगा. So जब इनका k values तीनों का अगर same आ गया, then we'll say that the reaction follows first order kinetics. Now यहाँ पे भी students ये question twisted है. This question is twisted in the way we encountered a question wherein pressure was given to us. यहाँ पे ऐसा volume के type में ऐसा कुछ तो भी question दिया हुआ है. So how do we go about solving this question? Again, this requires a lot of understanding of the concepts. You need to be very clear conceptually. Then only students you will be in a position to understand and answer this question. तो सबसे पहला इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं स्टूडेंट्स. सो इफ आई हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन, व्हाट इज द एस्टर, यहाँ पे हम लोग ने मिथाइल एसीटेट यूज किया स्टूडेंट्स. सो वी आर यूजिंग मिथाइल एसीटेट स्टूडेंट्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल एसीटेट? सर मिथाइल एसीटेट विल बी CH3 COOCH3. So this is methyl acetate. This methyl acetate students say is undergoing hydrolysis. So plus H2O. And the product that you will be getting students in this case will be acetic acid, so which is CH3COOH, plus the other product that you will be getting will be methyl alcohol, right? अभी अगर हम लोग देखेंगे students, this hydrolysis is carried out in the presence of dilute hydrochloric acid. तो यहाँ पर arrow में हमने लिख दिया HCl. Okay, so let's understand how do we go about solving this question. अभी ये रिएक्शन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका लॉजिक समझने का कोशिश करो स्टूडेंट्स. व्हेन यू एक्चुअली लुक एट दिस रिएक्शन, सो व्हेन यू हैव से 1 mole of ethyl acetate, 1 mole of ethyl acetate produces 1 mole of acetic acid, right? तो अगर 10 मोल मिथाइल एसीटेट समझो रिएक्ट हुआ है, तो हाउ मेनी मोल्स of acetic acid you think must have been formed in the reaction? Answer is 10 moles of acetic acid would be formed in the reaction. अगर ये 20 moles react होगा तो ये कितना moles बनेगा? Answer है 20 moles. मतलब what we are trying to basically do in this reaction here students is, हम लोग है ना from the moles of acetic acid formed, from the moles of acetic acid formed, we are trying to find methyl acetate reacted. I hope you are understanding students, because जो alkali से titration हो रहा है ना, तो alkali will obviously titrate the base. So जब ये titration करेंगे तो base will decide कि कितना acetic acid present है, और कितना acetic acid बना उससे हमको ये पता चलेगा कि कितना methyl acetate react हुआ है. And that's how we will go about solving the question. I hope you understand the logic that we are using. अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, जब ये reaction तुम carry out कर रहे हो, तो before any acetic acid is getting formed in the reaction, don't you think students there will also be hydrochloric acid that will be present? मतलब यहाँ पर जो बेस है ना, the base or the alkali that we are using, this alkali is titrating HCl plus acetic acid. ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए. Now, in this case we are not interested in the volume of hydrochloric acid.
बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमने खुद ने रिएक्शन में यूज किया है स्टूडेंट्स. वी आर इंटरेस्टेड इन एसिटिक एसिड का अमाउंट, बिकॉज अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड विल गिव यू द अमाउंट ऑफ मिथाइल एसिटेट दैट मस्ट हैव रिएक्टेड इन द प्रोसेस. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, लेट अस से दैट वी नॉट, अगर मैंने बोला V0, so let us say V0 is the volume of alkali required. So V0 is the volume of alkali required for titration at T is equal to 0. मतलब अभी रिएक्शन शुरू होने से पहले अगर मैंने सैंपल का टाइट्रेशन किया, so that is the volume of alkali which is required, and that volume of alkali is V0. Right, so can I actually say this is the volume of alkali, this is the volume of alkali required to titrate only HCl. I hope you understand this question, students. So this is the volume of alkali which is required to titrate only HCl, which is present initially. So this HCl is present initially, students. I hope you get the point. राइट अगर मैंने यहाँ पे देखो दिया है एट इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन, सो लेट मी से दैट इज वी इनफाइनाइट. अगर मैं बोलता हूँ वी इनफाइनाइट लेट मी से स्टूडेंट्स इज द वॉल्यूम ऑफ alkali रिक्वायर्ड फॉर HCl plus acetic acid. There's a volume of alkali required for HCl plus acetic acid after completion of the reaction, because reaction complete होने के बाद ही हम V infinity लिखेंगे ना. So after completion of the reaction, right? So this is the volume of HCl required only for HCl. I mean, this is the volume of alkali required only for HCl. This is the volume of alkali required for HCl plus acetic acid. So students, can you tell me what will be the volume of alkali required only for acetic acid? Can I say it is this plus this minus this? मतलब अगर मैंने स्टूडेंट्स जस्ट अ सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई एम कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टूडेंट्स. ओके, तो अगर मैंने लिखा स्टूडेंट्स V infinity minus V0, so can you tell me students what is V infinity minus V0? So V infinity minus V0 students will be the volume of alkali required to titrate acetic acid after completion of the reaction. Yes or no, students? So this is the volume of acetic acid, I mean alkali required to titrate acetic acid after completion of the reaction. When I say after completion of the reaction, मतलब ये पूरा का पूरा acetic acid बन गया है. अगर पूरा का पूरा एसिटिक एसिड बन गया है मतलब पूरा का पूरा मिथाइल एसिटेट रिएक्ट हो गया ना स्टूडेंट्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो कैन आई से स्टूडेंट्स दिस वैल्यू will be the initial concentration, which I can write it as A naught, or I can also write it as small a. I hope you're understanding, students. Right? I hope the first part is very clear. Then I say VT. When I say VT, students, what is VT? VT is nothing but it is the volume of alkali required. So it is the volume of alkali required at different time intervals. But the volume of alkali required at different time intervals. अगर ये वॉल्यूम ऑफ alkali required at different time intervals है students, just a second, I'll just push it forward. So it is the volume of alkali required at different time intervals for HCl and acetic acid. Sorry students. Yes or no students? So VT is the volume of alkali required at different time intervals for HCl and acetic acid. So can you tell me students, what will be the volume of alkali required only for acetic acid? So can I say it will be VT minus V0, because V0 मतलब क्या हो गया sir? V0 was the volume for HCl which was required initially. Yes or no students? So if I just subtract this value, तो हमको क्या मिलेगा सर? हमको यहाँ पे मिलेगा
Vt minus V naught, can I say students, is the volume of alkali required sorry, is the volume of alkali required for acetic acid at different time intervals. I hope you understand this, students. Now the question is, अगर मैंने अपना इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखा है स्टूडेंट्स, सो if we check our integrated rate expression, sorry students, integrated rate expression है k is equals to 2.303 by t log of c0 by ct, or can I say it is a upon a minus x to the base 10. Now students, when I say a, what is a? Sir, a is nothing but it is the initial concentration. What is a minus x? Sir, a minus x is nothing but it is the amount which is left behind. तो सर एक तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरा क्या है, अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड है स्टूडेंट्स. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द अमाउंट व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड स्टूडेंट्स, हाउ कैन आई फाइंड आउट द अमाउंट व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड? अगर मुझे अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड निकालना है, समझो a माइनस एक्स. सो व्हाट इज a इन दिस केस? हैव यू फाउंड आउट a इन दिस केस? a तो निकाला है ना स्टूडेंट्स हमने. व्हाट इज a? सर a इज v इन्फिनिटी माइनस v नॉट. सर a तो है v infinity minus v naught, but what is x in this case, students? Can you tell me? If we want to find out the value of x, what do you think what is going to be x in this case? अगर x का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, तो कैन आई से x इज नथिंग बट इट इज द वॉल्यूम ऑफ एल्कली रिक्वायर्ड फॉर एसिटिक एसिड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, क्योंकि जितना एसिटिक एसिड बनेगा उतना एस्टर रिएक्ट हुआ है ना. मतलब कैन आई से स्टूडेंट्स दिस वैल्यू इज एक्चुअली x. So a is v infinity minus v naught minus this will be vt minus v naught. तो इसमें से क्या कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलो सर. v naught और v naught कट हो जाएगा. ये सुनो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड ना, आई जस्ट इट इज माइनस एक्स ना, तो x विल बी, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना. तो आई डिड नॉट put the positive sign here, that's why it was a little confusing. So इधर पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, it will be v infinity minus vt, right? So what is the value of a minus x? Sir, a minus x का value v infinity minus vt. So if I just substitute this value in this equation students, what is the expression that we will be getting? Sir, k is equals to 2.303 upon t log, what is a? a है v infinity minus v naught upon what is a minus x? It is v infinity minus vt to the base 10. मैंने पहले भी ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो तभी बोला था कि जनरली दे विल नेवर आस्क यू टू solve these questions. They will generally restrict themselves to till this equation. वो equation तक अपने आप को restrict करेगा स्टूडेंट्स. But still, in case if you want to go ahead and solve the question, you have the value of v infinity, you have the value of v naught, you know vt at different time intervals, और time duration भी दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स. तो तुम्हारा k का जो वैल्यू है, अगर वो हर एक केस में कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब दिस रिएक्शन विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अगर k का वैल्यू हर एक केस में सेम नहीं आएगा स्टूडेंट्स, देन द रिएक्शन विल नॉट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. I hope you guys very clear with this numerical. Okay, moving to the next question students. So if you check, ये एक दूसरा question है. Even this question is an interesting question. The question says a radioactive substance is here. So a radioactive element gets spilled over the floor of a room. So there is a radioactive substance, और समझो एक room है. Say if I say this is a room, यहाँ पे वो sample गिर गया. Its half life is 30 days. मतलब you are given t half. उसका t half दिया है सर. So what is the half life period which is given to you? आंसर है सर half life दिया हुआ है. Half life is around 30 days. If the initial rate is 10 times the permissible value, after how many days will it be safe to enter the room? इसमें क्या चाहिए ना स्टूडेंट्स, अगर इसमें if the initial rate, और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता है, if the initial activity
Actually, activity is a right word. So if the initial activity is 10 times the permissible value, after how many days will it be safe to enter the room? अभी अगर मैं कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन कंसिडर करता हूँ, से आई कंसिडर एनी रिएक्शन विच इज अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन और अ रेडियो एक्टिव डीके, कैन आई से रेडियो एक्टिव डीके है ना स्टूडेंट्स विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. हाँ सर, रेडियो एक्टिव डीके तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा. When they ask you this question after how many days, मतलब वो लोग ने टाइम पूछा हुआ है तुमसे, राइट. इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का? आंसर है सर k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग C0 बाय CT टू द बेस 10. अभी टी हाफ दिया है स्टूडेंट्स, सो विल इट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट के? द आंसर इज नो सर, ये तो निकाल सकते हैं बिकॉज वी हैव द रिलेशन टी हाफ इज 0.693 बाई के. तो के क्या हो गया 0.693 बाई टी हाफ. तो जहाँ पर के है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आप लिख सकते हो 0.693 बाई टी हाफ लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम पूछा है ना सर, तो उसके लिए तो टी आएगा इनटू लॉग ऑफ. क्वेश्चन ये है ना स्टूडेंट्स, ये C0 CT के सी, ये क्वेश्चन का आंसर ना स्टूडेंट्स उनको ये क्वेश्चन से मिलता है. क्वेश्चन में दिया इफ द इनिशियल रेट इज 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू. अगर मैं बोलता हूँ परमिसिबल वैल्यू मतलब अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, समझो ये रिएक्ट हो गया रिएक्ट हो गया रिएक्ट हो गया, सिर्फ इतना ही बच रहा है ना, मतलब से इट हैज रिएक्टेड एंड ओनली दिस पोर्शन इज लेफ्ट, द शेडेड पोर्शन इज लेफ्ट, से दिस इज द परमिसिबल वैल्यू, कैन आई से दिस इज द अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड. तो ये सी टी है. तो जो इनिशियल है वो कितना है सर? सी टी का 10 गुना है ना. तो कैन आई से स्टूडेंट्स C0 इज एक्चुअली 10 टाइम्स सी टी, बिकॉज C0 द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी इज 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू. मैं बोलता हूँ डीके होने के बाद जब सी टी बचता है तो वो परमिसिबल है. सो अगर सी टी परमिसिबल है ना स्टूडेंट्स, मतलब C0 10 टाइम्स उससे ज़्यादा होगा ना. तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 10 CT अपॉन C0. इफ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी CT. तो ये क्या हो जाएगा सर? ये CT कट हो जाएगा, इधर log 10 आएगा, log 10 का वैल्यू 1 है. वी वांट टू कैलकुलेट T. तो T का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सर? T विल बी 2.303 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T हाफ विच इज गिवन टू यू. सर T हाफ का वैल्यू है 30 डेज अपॉन दिस विल बिकम 0.693. इसको सॉल्व करने जाएगा स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 99 पॉइंट समथिंग. सो वी राउंड इट ऑफ एंड वी से द आंसर इज 100 days. सो आफ्टर हाउ मेनी डेज स्टूडेंट्स विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू एंटर द रूम? आंसर है सर अप्रॉक्सीमेटली 100 days के बाद में वो रूम के अंदर एंटर कर सकता है. आई होप यू गाइस वेरी क्लियर विद दिस.